Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of daily news analysis that we do from Monday to Friday. Dear friend, this is very important to understand about what is happening around us, and make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. So dear friend, why it is important to understand what is happening around us? Because it will help you to solve the question that is based on current affairs. And one more thing is, so newspaper is very important, right? So what exactly we discuss in the newspaper analysis? My name is Ashish Bhargav, and make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Daily news analysis में we discuss about the national news, we discuss about the international news, we discuss about economy based news, sports based news, science and tech, personal news, summits and conference, and miscellaneous. And apart from that, we also discuss about the Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. This is also we discuss in daily news analysis. Let us remember, one book, one pen, one child and one teacher can change the world. So here we now. Good morning, Kunal. And here is the questions of the day. We'll ask you the 5 questions, and here is quick tips. Quick tips, which means with the help of mnemonics that we will learn lots of things. And here is the very first news article is about what Google's AI Genie that can turn images into video games. And why it is important? Because AI is, जो अभी at present है, AI which means artificial intelligence. This is artificial intelligence. So Google's AI venture DeepMind on Monday introduced Genie, a new generation generative AI, which is Gen AI, and that model that can create interactive video games from just a text or image prompt. So जो Genie है that can generate these games without prior training on games mechanism, which are essentially rules that make up a game. Genie है क्या? ऑफिशियल गूगल के डीप माइंड ब्लॉग पोस्ट के हिसाब से Genie जो है वो एक फाउंडेशन वर्ल्ड मॉडल है एंड जनरेटिव AI दैट कैन प्रोड्यूस आउटपुट फ्रॉम 1 or 2 input or prompt in the form of text, pictures, etc. that is trained on video sources from the internet. So what does Genie do? जो research paper है say that Genie is a new kind of generative AI that enables anyone to conjure up and step into generated worlds similar to human designs simulated environments. तो ये जो है it is trained on video only data. Genie can be prompted to the generative or diverse set on interactive and controllable environment. Why is it important? जिस standout aspect है Genie का in its ability to learn and reproduce controls for in-game character exclusively from internet videos. So this is noteworthy as such videos do not have labels about the performed in the video or even about which part of the image should be controlled. So the model ability to create an entire new interactive environment from a single image that opens up many possibilities. So today in the era of internet that you see, the journey started from the 2G, 3G, 4G, 5G, you can say is ChatGPT. So these things is new generational artificial intelligence and as well as generative AI. So it will help in the many aspects of our life. Next article here we talk about the towards emotionally unbiased judgment. What the main scenario of this? See, इसमें mainly justice की बात हो रही है जो judges हैं. So the journey towards emotional wisdom in the courtroom is critical, not only for enhancing judicial competence but also for reinforcing public trust in the justice system. So जो judges हैं are often
perceived beacon of justice. Their role demands a profound journey from emotionally to impartially. So in this context, that you should understand that judges must consciously cultivate an attitude of mindful detachment from intense emotions, especially anger, to anchor their decision in the bedrock of rational analysis for impartial application of the law. So empirical research reveals that the anger markedly impairs decision making, and the implication of this finding are particularly profound within the judiciary. So here the things you need to be understand, the the work on Nobel laureate Daniel Kahneman often insight into our propensity for cognitive shortcut in decision making that is shaped by evolutionary fight or flight instinct. So we are predisposed to rely on heuristics, mental shortcuts that enables us to swiftly navigate and react to our environment. So recognizing and addressing the impact of effective state like anger is not just an individual responsibility, but is a cornerstone of the maintaining the integrity and fairness of the legal system, right? So in crux यही है कि in the past अगर एक lawyer है that was not correctly dressed, the judges would simply look through and refuse to acknowledge them. This underscore a deeper issues, the necessity of judges to exercise emotional restraint even in the face of perceived disrespect or non-conformity to tradition, right? चलो जी, मतलब ज़्यादा कुछ इस आर्टिकल में था नहीं. नाउ यहाँ पे बात करते हैं. ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं, ये इमेज है यहाँ पे मोदी जी की, जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से. ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो फ्लाइट मिशन है, इसमें क्या है? So as an astronaut train, ISRO, which is Indian Space Research Organization, is working on various safety and technology. Gaganyaan mission, a first unmanned flight, is likely by the year end. So in short, we can think about यहाँ पे जो ग्रुप कैप्टन है पारसनाथ बालकृष्ण नैयर ग्रुप. So the 4 IAF Indian Air Force officers that have had extensive experience as test pilots and are currently in training. So the announcement was made at the Vikram Sarabhai Space Center in Thumba. So Indian Space Research Organization said that it has successfully tested the human readiness of the cryogenic. Cryogenic का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे लो टेम्परेचर पे चीज़ें होती, वहाँ पे होती, क्रायोजेनिक वर्ड यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट मिशन फ्लाइट जो थी गंगायान फर्स्ट थी, एंड अननेम्ड टेस्ट, और ये जो है दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ 2024. सो इसरो विल यूज एज द LVM-3 launch vehicle module that will rocket for all the Gaganyaan mission. LVM-3 that earlier called इनको पहले हम GSLV कहते थे, geosynchronous launch vehicles, right? So the 4 astronauts that completed their genetic training at Russia Yuri Gagarin cosmonaut training center that between February 2022 से लेके 2021 तक, और इसरो ने इनके साथ एक मेमोरेंडम साइन की हुई है that all these things. Here we move to the next one. अभी आज यहाँ पे देखो, यहाँ बात हो रही है a new railway stretch in Jammu and Kashmir. ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन है जम्मू एंड कश्मीर की, जो कहाँ पे है ये आप अभी इसमें इमेज में देख रहे होंगे, दैट इज संगलदान. द प्लेस इज हियर इज सॉरी दिस वन इज संगलदान. सो द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन जम्मू एंड कश्मीर एट संगलदान स्टेशन, द चेनाब ब्रिज एंड द अनिल खाट ब्रिज नियर रियासी. लास्ट वीक मोदी जी ने इनॉग्रेट किया बन्हीलाल संगलदान सेक्शन ऑफ द रेलवे लाइन दैट कनेक्ट्स बारामुल्ला इन नॉर्थ कश्मीर टू उधमपुर इन जम्मू. सो बन्हीलाल संगलदान सेक्शन की बात करें तो इसमें 90% से ज़्यादा 48 किलोमीटर रेलवे लाइन बिटवीन द बन्हीलाल टू संगलदान
passes through tunnel in the mountainous Ramban district that including the country's longest 12.7 kilometer tunnel, right? So the section has 16 bridge for the safety and rescue of passengers in the emergencies. The stretch has 3 escape tunnel with a combined length of 30.1 kilometer. What are the significant? See, अगर आप इस मैप में देखें तो इट इज़ क्लियरली मेंशन हियर कि ये आपका बारामूला है और यहाँ से ये उधमपुर है, राइट? सो इससे क्या बेनिफिट होंगे? सो with the train reaching Sangaldan, people now have a way to travel between Jammu and Kashmir even when NH44 किसी किसी टाइम में वो बंद हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने के बाद या सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसको बंद कर देते हैं, राइट? क्योंकि बहुत ट्रैफिक होती है वहाँ पे, वेहिकुलर ट्रैफिक इज़ too much is there. So between Ramban and Banilhal, due to the landslide, one can travel 30 to 35 kilometers to the Sangaldan by road from the Ramban. मिलेगा. अगर बात करें हिस्ट्री की तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुड बी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ रेलवे इन जम्मू एंड कश्मीर. सो फर्स्ट रेलवे लाइन जो था उस टाइम में प्रिंसली स्टेट था, ऑब्वियस दैट. तो दैट वाज अ टाइम ऑफ 40 to 45 किलोमीटर जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे सेलकोट के पास. 1902 एंड 1905 के टाइम में रेलवे लाइन वाज इम्पोज बिटवीन रावलपिंडी, जो कि अभी एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है, एंड श्रीनगर अलोंग द कोर्स ऑफ झेलम रिवर, विच वुड हैव कनेक्टेड इनटू द कश्मीर वैली विद द रेलवे नेटवर्क ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया. उसके बाद फिर महाराजा प्रताप सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज इन फेवर ऑफ जम्मू श्रीनगर लिंक वाया रियासी, एंड that were neither projected progressed. पार्टीशन के बाद क्या हुआ, जो यहाँ पे सियालकोट था that went to the Pakistan and Jammu was disconnected from the rail network of India. So until the inauguration of Pathankot Jammu line somewhere in 1975, right? So the railway station जो थे वहाँ पे that nearest to the Jammu and Kashmir was Pathankot in Punjab. फिर 1983 में क्या हुआ, that फिर से काम शुरू हुई वहाँ पे, एंड द लाइन बिटवीन जम्मू एंड उधमपुर अराउंड 53 किलोमीटर था वो, तो उसको फिर से यहाँ पे बनाया गया. सो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोजेक्ट था वहाँ पे, और उसमें एक चीज़ आपको जाना इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाया था 2002 की बात है ये. सो द प्रोजेक्ट गॉट मोमेंटम after 2002 when Prime Minister जो हमारे इस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी declared it's a national project on account of its being among the most challenging works undertaken by the Indian Railway. क्योंकि उसमें जो था ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ रुपीज़ खर्च हुए थे. उसमें चैलेंजिंग इसलिए नहीं था कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, क्योंकि ये जो ट्रेन स्ट्रक्चर है वहाँ जम्मू का, वहाँ पे रेलवे लाइन को आपको कंस्ट्रक्ट करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है. आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि वो वेट को मेंटेन कर सकता नहीं, और सी लेवल से उसकी कितनी हाइट है, ठीक है. सो बिकॉज चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो जो हिमालयाज आर यंग एंड द जियोग्राफिकली अनस्टेबल शिवालिक हिल्स एंड पीर पंजाल माउंटेन्स दैट लाइज इन द सिस्मिकली मोस्ट एक्टिव जोन्स, और जो सेस्मिक जोन है आपका 4 और 5 में आता है. सो द टेरेन स्ट्रक्चर इज क्वाइट डिफिकल्ट, right? And the seas heavy snow in winter, and it represents serious in challenger to construction of bridges and tunnel over there. So that's why ये बहुत challenging task था. Anyway, so this is all about the things about this in this article. Next में है यहाँ पे, तो can the IMEC address the Red Sea crisis? इसमें बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हैं. आप जो इस प्रीवियस यूट्यूब एनालिसिस में देखेंगे तो वहाँ पर हम उसको डिस्कस कर चुके हैं. बिकॉज सी द रेड सी दैट इट्स अ वेरी स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस फॉर द ग्लोबल ट्रेड. और एक यहाँ पे एक स्ट्रेट मतलब नारो लैंड होते हैं जो 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करते हैं, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ जियोग्राफी में कहें तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बाब एल मंदाब स्ट्रेट जो है विच लाइट बिटवीन यमन एंड दिजबौती के कनेक्ट करता है रेड सी के पास. सो इंडिया का जो ट्रेड है विद द यूरोपियन एंड द नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज दैट फ्लो इंटायरली थ्रू द रेड सी रूट विच इज ऑलमोस्ट 24% of its exports and 14% of its imports.
तो अगर क्राइसिस होगी तो ऑब्वियस आप हमारा ट्रेड इम्पैक्ट करेगा उसमें, ठीक है। एंड IMEC के हिसाब से, ये IMEC है क्या माय फ्रेंड? IMEC का मतलब क्या होता है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आप कहीं पे इसे लिख सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स दे विल आस्क यू इन योर एग्जाम कि समवेयर इन द न्यूज IMEC, so what does it stands for? So it's India Middle East Europe Economic Corridor. So इसको अनाउंस किया था ड्यूरिंग G20 के टाइम में, G20 के समिट्स हुए थे 2023 में। सो दैट वाज एस्टिमेटेड टू कट द जर्नी टाइम फ्रॉम इंडिया टू यूरोप बाय 40% एंड द स्लैश ट्रांजिट कॉस्ट बाय 30%। तो ऑब्वियसली बहुत हद तक ये इंपॉर्टेंट है। चलो जी, अब कुछ इसमें देखते हैं कि आगे की क्या आर्टिकल्स हैं। अभी डिकोडिंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, अब इसमें क्या चीज़ें हैं ये समझो। इस आर्टिकल में ये चीज़ें हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये एक सर्वे है दैट कंडक्टेड एवरी 5 years टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड्स। So इसमें what was the survey conducted? Why was this round of consumption survey delayed? So the survey, previous officially released survey was conducted in 2011 and 12. So what are the findings regarding rural and urban consumption in the survey? इसमें जो सर्वे हुआ that monthly per capita consumption expenditure MPC was 3,773 for rural areas. उस डेटा से हम देखेंगे क्या क्या है इस फंडिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली। द सर्वे फाइंड्स दैट द कंजम्पशन गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज इज नारोइंग, बट इनकम इनइक्वालिटी दैट कंटिन्यूज टू मेक स्पेंड हायर। और ये जो सर्वे है ये बताता है कि जो हाउस होल्ड्स हैं आर स्पेंडिंग लेस ऑन फूड देन एक्सपेक्टेड, और MPC ऑन फूड बाय रूरल हाउस होल्ड इज जस्ट 46%, वेयर एक्सपेंसेस ऑन नॉन फूड आइटम्स है 54%। और अर्बन में क्या है, जो शहर के एरिया है वहाँ पे द फूड नॉन फूड दैट मिक्सड इज 39 एंड 61%। अब देखो इस डेटा से बात कर, डेटा देखते हैं। देखो ये लिख सकते हैं, व्हाट रूरल इंडिया ईट्स सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट, एग, फिश, मीट, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस, शुगर एंड सॉल्ट एंड बेवरेजेस। कंपोजिशन ऑफ फूड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब 1999 से लेकर 2000 के बीच में ये कहानी थी और ये कहानी थी। नाउ इट्स नीड टू बी अंडरस्टैंड, यहाँ पे 37.42% यहाँ पे है, उसके बाद 32.86%, यहाँ पे 20। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो सीरियल्स हैं वो किस हिसाब से रेशियो कम हो रहा है इनका। फिर पल्सेस, फिर मिल्क, फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट, और यहाँ पे बेवरेजेस पे आप देख सकते हो ये भी 2.1 है, जो कि अर्बन इंडिया में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो गांव के जो लोग हैं उसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट रूरल इंडिया ईट्स में कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और द कंजम्पशन ऑफ फूड जो है उसमें आप देखो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है कहाँ पे खर्च करती रूरल इंडिया, 20.74। तो ये आपको दिख रहा होगा इसमें किस चीज़ के ऊपर, बेवरेजेस के ऊपर। यहाँ पे देखो नॉन फूड आइटम्स पे। अब अगर देखें यहाँ पे अर्बन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अर्बन इंडिया में सबसे ज़्यादा, अगर आप 1999 और 2000 में देखो तो सबसे ज़्यादा आप सीरियल्स वहाँ भी लोग खाते थे, जो मतलब राइस, व्हीट एंड ऑल, और 61.4% यहाँ पे ये था। उसके बाद अगर देखें वेजिटेबल्स एंड इन पे कितना कम, 10.64% है। बट अगर आप अभी के टाइम में देखें 22-23 में सबसे ज़्यादा शहर के लोग क्या खाते हैं, तो आप देखेंगे सीरियल्स पे 9.29 है, यहाँ पे सबसे लेस पे आपका 1.53% है। इट मीन्स ये कोई सबसे लेस पे डेटा है हमारा 1.53, वो आपका बेवरेजेस पे सबसे लेस यहाँ पे खर्च होता है। सबसे ज़्यादा 27.16% जो है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो है आपका किस चीज़ के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, सॉरी बेवरेजेस के ऊपर सबसे ज़्यादा है, और शुगर एंड सॉल्ट के ऊपर सबसे लेस अमाउंट है।
सो एज वी कैन सी इट हियर द शुगर एंड सॉल्ट अमाउंट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियस है डायबिटीज़ से लेके जितने भी केसेस होते हैं यहाँ पे उनके लिए, और कई बार तो आपको देखा भी होगा कि आपके जो ईटिंग स्टाइल है उसके वजह से डॉक्टर्स आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए बैन भी करता है। तो आप देखोगे शुगर एंड सॉल्ट पे जो अर्बन इंडिया है सबसे कम अमाउंट खर्च करती हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा अमाउंट वो खर्च करते हैं किसके ऊपर, बिवरेजेस पे सबसे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे खर्च होता है। अगर 18.43% देखें तो मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर, कॉफ़ी, मिल्क से जितने भी बड़े हैं, पनीर एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो। और अगर आप देखें इसको कंपेयर करें अपने रूरल इंडिया के साथ, तो रूरल इंडिया व्हाट इट ईट्स सबसे ज़्यादा अमाउंट आप देखेंगे यहाँ पे वो खर्च हो रहा है 20.74%, वो किस चीज़ के ऊपर खर्च हो रहा है, वो बिवरेजेस पे खर्च हो रहा है। यहाँ भी शुगर एंड सॉल्ट में देखोगे तो शुगर एंड सॉल्ट में यहाँ पे 2.1% है एट प्रेजेंट, अगर इफ़ यू कंपेयर टू द फ्रॉम द 1999 से लेके 2022 के बीच में। सो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ये जो कंजम्पशन डेटा था और ये जो है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीज़ें बताई। अब आपके सामने है नेमोनिक्स क्विक टिप्स। क्विक टिप्स का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स वी लर्न द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द जनरल अवेयरनेस। परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, सॉरी, UNSC which means sorry, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल्स के कितने मेंबर्स हैं? क्या इज इंडिया एज अ मेंबर ऑफ UNSC? यस, इंडिया मेंबर है UNSC का, बट वो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, नॉन परमानेंट मेंबर्स है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के। परमानेंट मेंबर्स ये 5 है। इसको लर्न करने के लिए वी कैन यूज द नेमोनिक्स दैट फ्रेज फ्रांस R stand for Russia, America, China and England. So with the help of mnemonics we can easily learn such kind of things. तो इससे एग्जाम में क्या होगा, you would be able to solve the question because वो आपसे पूछेंगे which is not a member of permanent members of UNSC. Simply with the help of mnemonics we can learn it. अब आपके सामने ऑफिशियल लैंग्वेज, यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या, फ्रेंच एंड अरेबिक। अभी इसके लिए फेसर्स को लर्न रखो, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश, तो ये आप लर्न कर सकते हो। दिल्ली सल्तनत के किंग को लर्न करने के लिए यहाँ पे देखो, टमाटर खाओ, क्या मतलब है, सब खाओ टमाटर, सब लो मज़े। एस स्टैंड फॉर स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी एंड मुगल्स। सो बेसिकली दिल्ली सल्तनत के किंग को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लर्न करने के लिए यू कैन यूज दिस टेक्निक। नाउ देयर वर सम स्टूडेंट्स हु आस्क्ड अबाउट कि नोट्स को कैसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। तो ये मेरे सेल्फ के नोट्स बने हुए हैं, उसको आपको मैंने आपके सामने दे दिया, आप इसको देख सकते हो कि आपने कैसे कैसे नोट्स बनाने होते हैं। सो लाइक विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज माइंड मैप से क्या होता है, आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न इट। आर्टिकल 15 लाइक डिस्क्रिमिनेशन, 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, Article 24 children below 14 years cannot work, 343 to 51 about Hindi language, and Article 51A talking about fundamental duties. Emergency के लिए आप देखो इसको इसमें सब में 4 ऐड करो तो अब एक आपको नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। Now it's time to questions of the day, and here we have the very first question. Which of the following gives the global gender gap index that ranking to the countries of the world? World Economic Forum, UN Human Rights Council, UN Women and World Health Organization. So the right answer is World Economic Forum. Global Gender Gap Report is an index designed to measure gender equality. It was first published in 2006 by the World Economic Forum. Next one is talking about Corruption Perception Index. और ये कौन रिलीज करता है? Transparency International. The Grammy Awards honor exceptional accomplishment in the field of literature, sports, music, public service. So, music.
Which of the following schedule of the Constitution gives a clear constitutional recognition to the existence of the system of political parties in India? Third schedule, seventh schedule, 10th schedule, 9th schedule. एंटी डिफेक्शन लॉ किस में आता है? 10th शेड्यूल में, तो इज ऑब्वियस सी इज द राइट आंसर. And here is the last question. The Indian model of government is also called Westminster model of government because India follow parliamentary form of government. D is the answer. Westminster is a place in London where the British Parliament is located. It is often used as a symbol of British Parliament. So, the Parliament is the legislative organ of the Union government. It occupies a preeminent and central position in the Indian democratic political system due to adoption of the parliamentary form of government, also known as Westminster model of government. So, this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this, please let me know in the comment section, and I hope that you enjoyed the session a lot. We'll meet you in the next YouTube session. Stay tuned. We'll meet you in the next YouTube session. Till then, bye-bye and take care.